Swayam, Sir, 9123. 9123. Swayam is still sleeping out. No, sir, not sleeping. Tejas, Sir, 6094. 6094. So 1, 2. So those are attendance and noted down. Just I'm telling it. Please revise. Akash. Sorry, I'm telling the receipt number 1064 4140 2035 3144 4090 3040 3037 3030 9097 6177 9123 6094. Somebody left? Chinmay? Sir, one more thing. Sir, did you mark my attendance yesterday? 1064. Akash Kumar? Yes, sir. Yesterday, I think I have marked. What about the problem? Sorry, sir. So what is the problem? I have not marked your attendance. Oh. Now, why this doubt came to you? Sir, actually, there is a network issue. That's why I'm not able to hear you clearly. No, if you are present throughout the class, I can mark it out. If it network Yes, issue, yes, I was present. That's why I wanted to confirm. that is taken Okay, on. sir. You can Okay. attend. Sorry about that. Okay. Okay. Okay, sir. Actually, and the activation issue I can identify. Okay, okay, sir. Okay. So attendance will not be a problem for you. Like Simran yesterday not responding to me because he's doing some busy work, office work. So first class I'm excusing. Next onwards, tomorrow attendance, extra attendance also give. But tomorrow onwards should not be the case. Okay? Okay, Just sir. take instruction. I know I am good, that's why I'm giving attendance. But don't take it granted. Anyway, so if you believe Sunday also your total life is totally busy. I know that. So throughout the 5 days you are working in the office, and Saturday Sunday you are missing the college and again doing classes. So your life totally busy. That I understand. But you have to also go by the regulations. Okay. Like Chinmay is not responding me. So I'll give time Chinmay 10 minutes more, then I will disconnect. Simple. Okay. So your task is that today all of you made a copy. So note down the differences between convection sequence circuit and features of convection sequence circuit. After that, I'll go for questions. So yesterday we discussed about K-maps. So two questions I'll give you. DL paper, logic design paper, you covered in third year, second year, sorry, third or fourth semester, might be third or fourth, I don't know. So you have already completed the design of lot of things, multiplexer, demultiplexer, hardware, subtractor like this. So today I'll only give you a task to design a full adder and full subtractor. That's all. No more. So that I want to know whether you have remembered something or not. It is not that things will come in the question, but basically design is full adder, full subtractor. That's all. Okay. So all of you do one task. After note down this one. I'll give a question to you for full subtractor design. So make a tutorial for that and write the question, solve with KMF and tell me the design. Do the design using AND or not gate and so forth. Am I clear to you? Full adder you already designed. So I'm going full subtractor. Okay. So all of you first note down the differences between condition and sequence circuit. After that you go for that. So I'm giving another 10 minutes to note down the difference. After that you go for the questions. Okay, let me share so that I note down. This is the difference between convolution, sequential circuit. So all are written. Arpita, visible? It's written. So please note it down. After that, go to the design. Susneha. Who is that? Susneha, you joined? Susneha Priyadashini.
Sneha Priyadarshini. Yes, sir. Why you late? Half an hour, 35 minutes almost. Sorry, sir, but I've misread the message. I'm not getting you. What are you telling? Sir, I misread the message. Actually, on Saturdays, I have working days. Ah, So I misread the message. Yeah, it was from 10:30. I saw. Okay. So So from next next time, time, it won't happen. no, I know that did not happen. You, okay. So we have instruction not to allow the students after 15 minutes. Still I'm allowing it. Okay. Knowing that it did not Oh, happen. okay, sir. And what is your registration number, Sneha? Just let me, It's 2041. let me open. Ah, registration number? The 2041. The name is Sneha. So Sneha Priyadarshini. Sushneha. Susneha. You're telling exactly Susneha. You're telling Sneha. So Sneha, sir. It's not Sneha. Again, pronounce it. Just Susneha. pronounce it. Tell me the spelling. I can read your name. It is Okay. S U for Sue, SNE Sneh, HA Yes, Susneha. sir. Yes, So sir. It's Susneha. you are telling Sneha, but it is spelling wise it is Susneha. You have to which Sir, place I'm saying actually? Susneha. You are telling Sneha, but somebody read your name as Susneha. Anyway, that is separate issue. You are from which place? Sir, I'm from Bhubaneswar. You are not. You are a Oriya, na? Yes, sir. Oriya spelling is like this: Susneha. Anyway, I'll tell Sneha. It doesn't matter. Like angry with me. So all please note down the difference in the combination sequential after they go through student. Okay, Okay, and you sir. get answers. So please note down quickly. Okay, sir. So your roll number, registration number again. Last four digit. Sir, 6283. 6283. Sorry. I didn't Yes, see. sir. No, sir. Chinmay is still absent. Okay. So I'm giving you 5 minutes notice quickly. Yes, sir. No, I am just giving 5 minutes to note it down quickly. Okay. Okay, sir.
So completed all. Completed. Sujita, completed. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So use working. Satya Padma. Who is Satya Padma? Satya Padma. Who is Satya Padma? Dipankar. Chinmay. Chinmay Sahu. Hello. Others I'm audible? Chinmay, Dipankar, and Satya Padma. These three. Chinmay, Dipankar, Satya Padma. Chinmay. Apna am audible? Yes, sir. I think these persons were not listening. Yes, sir, Shweta Padma. Dipankar. Dipankar 543 Kumar. Who is that? Satya Padma. Yes, sir, present. Why you are not responding when I'm calling your name? I was responding, sir. This time you responded. Before that, Yeah, I was responding. Maybe because. Sorry, sir. Maybe because of the issue. I was responding actually. what issue? Your attendance is not there. You joined late. Yes, I joined late. You joined just Yes, after 45 minutes, 50 minutes of joining. So why? I was trying to join, but was not able to join. I joined at 10:30. Why? 10:30. Susneha joined at 10:35 around. At that time you are not there. I've taken her attendance. Don't tell me lie. No, sir. At around 10:30 only I joined. Okay. You are not allowed. Why? What is the reason of 10:30 joining? I was not able to. I did not get the joining option. Why? Yes, I was not getting in 9:30 also in the morning I joined, but there was no one. And after that I was trying to join, but the join option was not there. This thing is useless thing for today. Have you noted those things? I would have said. Yes, sir, I have noted down all the differences. You do the question, I'll give attendance. Otherwise, now. What about Dipankar? Yes, sir. Good morning, sir. Why you are not responding? Sir, I just boarded off the flight at 10:25, so therefore I was not able to attend the Flight? call or not able to join in time.
What flight? I traveled from Pune to my hometown because of some medical issues. Therefore, I was in flight, morning flight. Not always issues. Therefore, From Pune to Bhubaneswar. now sir? in the front you are reading. I'm not No. able to hear you. Panvi, let me tell you very frankly, you are not Yes, sir. here to join and do whatever you want. You are attending a class means to join attentive. Otherwise, don't join. So I do join it attentively, but for some medical issues, I do have to travel urgently from Pune to my Yes, hometown. that is your issue, na? I have also my own issue. I'm sharing with you. This class is for I'm sharing the document, I give you problem, and you join and watch a movie. What is that? You do the marketing, you travel. What is that? Joining only. That's all. Yes, sir. I'm giving a question to you, and I'll share a question after that. You too, basically. Do it, otherwise I'll not allow you. I'll not give attendance. I have to do the question that you have given. No? What happened? I have to do the question which you have gave. That's the thing, no, sir? Class. I'm asking. Always time pass that you join and do something else. Okay, I did it something else. Okay, I'll try to solve the question, but I was in the flight, so that's why I was not able to join in time, At and I least have your to go back home. That's the thing, no, sir? this class has personal issues. They are sacrificing their personal issue and joining the class. Don't tell me these things in the class. Come on platform. Okay, sir. So all of you know how to design a half adder and full adder? Arpita, you covered or not? Sir, we don't remember. That's why. For remembering part, I'm giving this question number 1.2 and 1.1. Okay, only two questions. 1.1 is for remembering how to make a truth table. How to make a truth table? Question is A, B, C. Three variables are there. Listen to me carefully. So make a table A, B, C. In the top you write three variable means you can take the values from 0, 0, 0, then 0, 0, 1, then 0, 1, 0 up to 1, 1, 1. Okay? Then put the values in the equations and find the function. The fourth column carries F. Here, that is 1.1. 1.2 is a full subtractor design. Full subtractor means X is first data, Y is the second data, and B in, borrow in, is the third data. You just make a table 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Okay? After that, you find the difference, B, and B out, borrow out. So, the equation for difference is X minus Y minus B in. So, accordingly, make the truth table. After that, from the truth table, you can put the K-map and find the expressions for B difference and B out. But at least make the truth table first. Okay? So solve question number 1.1 first, then 1.2 truth table. Then share with me in the chat window. For these two questions, I'm giving you 15 minutes. Clear? Any doubt, anybody? Any questions? Nobody responding. All you agree? Any We are question? trying, sir. No, sir. Try. Actually, this question should be 2 minutes. Because if you're trying, I'm giving you. Okay, you do one thing. Solve question number 1.1 fast, then design a full adder.
Then with that changes, you can do question number 1.2. Three tasks today. 1.1, then full adder, then 1.2 full subtractor. That's all. Okay. I know I want to see how much you're doing. And everybody has to share the copy in the chat window by taking the image. Total time stands for first question and full adder. Total question stands for you know the full adder truth table? Sum and borrow, sum and carry. Let the input is x, y, z. So x0, you can vary the input. You make three columns: x, y, z, or a, b, c. Starting from 0, 0, 0 to 1, 1 on right, 8 entered. Then you find sum. Then you find carry. So write the expressions for sum and carry for a full adder. So question number 1.1 solve and full adder, and share me within 15 minutes in the chat window by taking image. All have to share.
So I got the solution of Siddhant. Then Arpan. Good. Then Sukriti, Subham Patnaik. Only four. So these four I'm going to give you marks. Others, what should I do? Others? Satupadma, finished. Yes, sir, sending. Okay. Then Tejas. Okay, I'm giving another 10 minutes to you. All after that, I'll take the final. Those are submitted, those not submitted.
So final answers I got from, time is over. I cannot give you more time than that. We got the answers from Siddhant, then Arpan, okay, Sukriti, Subham, Sayan, after Sayan I find Sukriti again, Acha, Arpita, after Arpita, Sudipta, Satya Padma, then what I find, okay, this much only. Satya Padma, am I audible? Yes, sir. What is your roll number? 204 No, 100 40 last 4 digit. 4040. Okay, 1 minute. 4040. Akka, Satyita, Draupadi, Arpan, Dipankar. Dipankar, Jitin. Yes, sir. Jitin, you are not done? Sir, not completed, sir. Why not completed? It's just very small thing. How can you progress more? Quickly complete it. What about Dipankar? Yes, sir. You have done? Share it. Sir, not completed, sir. I told you. So when you complete it, class is going to over. Sir, let me do it. I'm trying to do. Trying today, within 5 minutes maximum, so complete and submit. Share. Okay, sir. You joined late, so Sutarna has got the attendance because he has shared. You just share it. Okay, I'm trying to solve and I'll post. I'll submit it. Okay, let me tell you one thing here. After that, I have told you the difference between combination and sequential circuit. Basically, what you find in that, in combination circuit, there is no feedback. Whatever the output you are getting the same, that depends on the present input only. But you go to sequential circuit, you find the output at any state depends on the present state. Okay, any state means I'm telling future output, next state. Next state depends on the present state and the present input. Okay. So sequential circuit is again two types: millisequential circuit, MEALY, and Murray, MOORE, Murray sequential circuit. In millisequential circuit, I'll go to the next class about this. I'll show you example how to design also one two designs to you, and that only depends if you export in these small designs. Then you can understand. So in millisequential circuit, the output, next state output, that depends on the present state as well as present inputs. But in Murray sequential circuit, the next state output depends on the present state only. There is no present input. That's the only difference. I'll show you the difference in the next class. Now, before coming to the problem here,
let me tell you brief about the flip flops. You already covered the flip flops. D, JK, and T. Three flip flops are there, and D can be used as a latch also. Anybody can tell me the difference between flip flop and latch? Anybody? The difference between flip flop and latch? Anybody? Tejas? No, sir, I don't know, sir. Why? You have a Google phone, you can search in the Google and do it. Sir, but I will not understand it. Good. I mean, what is this truthful person you are? In today's world, I never found a person like you. If you use the phone, I can see that also. It is not a class, but still you are not using it, or you are not don't have the you're feeling lazy, and why should you type in the phone? And no, typing is also not required. You can speak Google and understand. Anyway, so anybody? Sneha? Sneha previously absent. Sneha has gone, so I'm cancelling the attendance of Sneha then. I wait for 5 minutes. If Sneha is not responding, means absent. Hello, hello. Sneha responding. Hello. Don't tell Sanjay hello means what? So my voice is audible? Audible. Now you are speaking audible. Before that you are sleeping, so it is not audible. No, sir, I was saying something, but I No, think no. not audible. My principle is very simple. It may be discussing you. Generally, people what you are doing in the online class is very good for students. The through mobile phone they join, or through laptop they join, then they enjoy their time. Okay. But teachers go on speaking only. Okay. So my principle is a little different. If I am taking 2 hours class means you also have to attend. I am attending means you have to attend. Simple principle. Okay. Yes, sir. Yes. Anyway, that I know people are angry with him, but what can I do for? Anyway, so basic difference between flip flop and latch. Anybody? Sneha? Sorry, sir, I didn't get you. Basic difference between flip flop and latch. Have you heard these two terms? Flip flop and latch. Oh, sir, I don't know. You don't know. Acha, Sukriti, Yes, sir. what's the difference? Sukriti will tell. Sir, I remember like in flip-flop there was a clock signal in the input side. But in the latches, we designed the latches basically with the NAND NOR means the logical gates. There is Good. no term regarding clock signal. You are almost correct. Okay. In flip flop, we have a triggering by clock pulses. The output depends on the clock input as well as the normal input. The latch, there is no clock. There is a enable or control signal. So the difference between control signal and clock is that clock is a periodic one, automatically changes from 1 to 0 and continuously. But control signal means it is not periodic one. It is either 1 or 0. You have to change it whenever you require it. Okay. Anyway, D, JK and T flip flop is there. In D flip flop, we find the Q is equal to D. Q means what? Q next. Next output is equal to D. Input. What is the input you apply that appears as the output? In JK flip flop, you find J for set, K for reset. That means whenever J is
What happened, Dipankar? You sharing something? Dipankar, how you're done? You're traveling? You're done only full adder. But I've not asked that. I've asked first 1.2, then 1.1 and 1.2, then full adder. Anyway, Okay, sir. I'm giving you attendance. Okay, for this class, I'm giving attendance. Tell me your roll number. Sir, that's You good. told me. Dipankar. Next class, don't do it. Okay, sir. Sorry. Don't be sorry always. Should be happy. Registration Dipankar. 2041 Last four digit. 057 1057. 1057. Which section? Section B, sir. Then you know me, I think. You know me then. I have taught you. I think so, sir. You attending offline classes? Very rarely. Everybody is attending rarely. Next. Okay. Anyway. So thank you. Dipankar, your attendance is given. Next. Don't do that. Thank you, sir. So first thing is that Okay. what I'm discussing. Whenever I'm telling that JK flip-flop, J for set and K for reset. So whenever J is 1, output is changed to 1. Whatever the previous value, 0 or 1, they change to 1. Whenever K is 1, output is reset. Reset means what? Whether it is 0, remains at 0. If it is 1, change to 0. Similarly, for J is equal to set means output is 0 means previous output 0 means next output is 1. And previous output is 1 means remain at 1. Okay. But whenever JK both are 0, 0, flip-flop output is not going to change. Not going to change means what? If it is 0, then it is again 0. And if it is 1, it is remained at 1. But if the J and K both are kept at 1, 1, then flip-flop toggle means the next output is complement of the previous output. So the flip-flop will act as a T flip-flop, means toggle flip-flop. And every clock, the output is going to change. Means you can say whenever J is 1, K is 1. So suppose the previous output is 0, next output is also 0. Next output is 1. And previous output is 1, next output is 0. So it is going oscillating 1, 0 and 1, 0. And if J and K flip-flop both are tied together and design a flip-flop, that becomes a T flip-flop, toggle flip-flop. So in T flip-flop, when both, because J and K combine to make a single input T, so whenever T is 0, both J and K 0, so no change in the output. Means previous output is 0 means next is 0, and previous is 1 means next is 1. But whenever J and K both are 1 means T is 1, so it is out complemented. Every clock it is complemented. That means if it is 0, it is changed to 0, it changed to 1. If it is 1, change to 0. So 1 0 1 0 goes oscillating, or 0 1 0 goes oscillating on every clock. Okay, like Supriti told is correct that flip-flop receives clock as input as control signal, periodic clock pulses, and latches don't have a clock pulse. So JK and SR, JK and T, they are not latch, they are only flip-flop. D can be act as a latch as well as a flip-flop. So we're going to, already it is 11:55, so we're going to finish the class. So any doubt, any questions, ask me. I'm giving 2 minutes to think and ask me questions. So next class we go for the design, sequential circuit design. So my advice to all of you that when Saturday come to the class, you get 5 days gap. So in the meantime, try to find little bit time and revise the portions. TL paper. Okay. Any questions? Ask me now. Otherwise, I leave the class.
So no more questions? Okay, thank you all. And if at any time anybody is facing some issues, please unmute your mic and tell me. So I'm just sharing my screen. Okay, so today we'll look after measurement of solar radiation. So last class we have covered these things. Solar radiations. Last class we have covered about absorption and scattering, these things. Today we'll cover measurement of solar radiation, your pyranometer, pyroheliometer, and sunshine recorder. These three meters are used generally for your solar radiation purpose, radiation measurement purpose. So I have sent a link. All of you, please unmute yourself and बताओ मुझे कि आप लोग को नोट मिला जो मैंने कल शेयर किया था, किसी को मिला या नहीं मिला? मैंने कल कुछ नोट्स शेयर किए. हाँ, We got the link, sir. we got. Okay. Others, what about others? Got it, sir. Okay. What about others? नहीं, बाकी लोग जस्ट लॉग इन करके छोड़ के चले गए. ओके, ठीक है. जिनको अगर नहीं मिला तो कल मुझे कोई भेजे थे कि सर लिंक मैंने किसी को भेजा हूँ, प्लीज वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए. वो ग्रुप में मैं भेज दिया हूँ ऑलरेडी, एंड आज एक और बार भेज दूंगा. एंड आई नो कि होली के लिए आज थोड़ा अटेंडेंस कम है. ठीक है, ओके. स्टिल यू पीपल हैव जॉइंड. दैट्स so pleasure for me. एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था कि इतने लोग ज्वाइन होंगे. ओके, ठीक है. तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. एंड पायरोनोमीटर, सी द फिगर 4.6. Figure 4.6 is for pyranometer, and this pyranometer is actually what happens. See, it's a both your pyranometer and your 4.7 is a pyroheliometer, and this is 4.8 is your pyroheliometer, one type of pyroheliometer, and your 4.9 is a sunshine recorder. In all these instruments, pyranometer, pyroheliometer, yeah, sunshine recorder, in all these instruments what happens, your there is a sensor to measure your solar radiation. Okay, there is a sensor to measure your solar radiation when the solar radiation will be measured. And what happens actually what happens, your pyrometer, see यहाँ पे एक चीज लिखा है कि your voltage output approximately 9 microvolt for watt per meter square. Okay, 9 microvolt for watt per meter square, and has an output impedance of 650 ohm. That is for pyrometer. So what happens actually, your जो सोलर पीवी सेल होता है ना, उसके सोलर पीवी या एसपीवी बोलते हैं. एसपीवी का जो आउटपुट होता है ना, वो करंट फॉर्म में आईपीवी, करंट ऑफ पीवी सेल्स. हम लोग देखते हैं कि कितना करंट जनरेट हुआ. तो ये जो वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 9 माइक्रोवोल्ट पर वाट पर मीटर स्क्वायर, एंड आउटपुट इंपेडेंस ऑफ 650 ओम. ये दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको किस में मिलेगा? आपको मिलेगा माइक्रोवोल्ट पर वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम. तो ये आपको क्या देगा? ये आपको करंट पर यूनिट एरिया दे देगा. ठीक है, तो इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, देखो ये 9 माइक्रोवोल्ट पर वाट पर मीटर स्क्वायर है. तो मैं कल बताया था कि सोलर रेडियंस जो इरेडिएशन मेजर करना है वो किससे मेजर करते हैं? वाट पर मीटर स्क्वायर में. So if you will multiply watt per meter square with the help of with voltage,
will got with 9 microvolt per watt per meter square. The watt per meter square will be cancelled out. We'll get only 9 microvolt. So with that microvolt, if we'll divide the current, divide the impedance, we'll get the current output. Okay, that's why the pyranometer will measure the solar radiation in terms of current. Okay, so see the figure 4.6 is a pyranometer, and next is a pyroheliometer. So what happens in pyroheliometer is used if you want to measure the solar radiation in an inclined surface. Okay, in a normal surface you want to measure, if you want to measure the solar radiation, you can measure it with the help of pyranometer. For any inclined surface, if you want to measure, we can measure with the help of pyroheliometer. So you can see it's an inclined angle of 5.5 degrees generally. You can see also the picture. So the pyranometer, even the pyranometer also can be used in inclined surface, but for more larger inclined surface, generally your pyroheliometer is used. Okay, so you can see here the pyroheliometer, the figure 4.8, how the pyroheliometer works actually. See the pivot likha hai, the pivot for 2-axis rotation. If you change the axis of rotation, the pivot of rotations will be changed. One minute just. Okay, so what happens? It's a pivot for 2-axis rotation. You can just see the figure 4.8, and sun rays is directly entering into the sensing element, both in pyranometer या pyroheliometer. There is a sensor. Sun rays is directly falling in the sensor, and the sensor we have same. The sensor have voltage is here 8 microvolt per watt per meter square, and your sensitivity and your impedance is also, impedance या resistance is also around 650 ohm. Okay, so and you can see there are diaphragm are there. Diaphragm इसका काम क्या है? देखो ये जो diaphragm का जो horizontal जो लाइन खींचा हुआ है ना, उसमें ये horizontal लाइन जो diaphragm का है, उसमें क्या है, ये ब्लैक कोटेड है. ठीक है, ये ब्लैक कोटेड है. तो ब्लैक कोटेड है तो क्या है, आप खुद इमेजिन करो, आप समर वेकेशन में आप जब ब्लैक शर्ट पहनते हो तो क्या होता है, आपको ज्यादा गर्मी लगता है. ठीक है, ब्लैक कलर इज द हाई अल्बेडो इफेक्ट, मतलब सॉरी लो अल्बेडो इफेक्ट. अल्बेडो मीन्स reflection will be less. Albedo is the ratio between the reflection divided by incidented. If you will in a summer season, if you'll place a black shirt over you, so what will happen, your means absorption will be more, and your incidence will absorption by incidence ratio will be more, then your radiation will be less. So if your radiation will be less, then your albedo will be less. Similarly, the diaphragms are coated with black color, such that what will happen, such that in the all amount of sun rays will fall in the sensing element. Okay, acha, this is your pyroheliometer. Next is your sunshine recorder. So in sunshine recorder you can see a horizontal platform. In a horizontal platform a sunshine recorder is placed, and here you can see the spherical lens and the spherical bowl section. Just a lens is there. So with the help of lens, what will happen, all the solar rays will be concentrated at one place. All the solar rays will be concentrated at one place. So this will measure your total sunshine hour. Total sunshine hour means let us consider 12 o'clock is the noon hour. So up to 6 a.m. to 6 p.m. that is generally called your sunshine hour. So it will measure ki actual the sunshine hour, how much hour is the sunshine hour, it will measure. Okay, next is your solar radiation data.
Okay, so solar radiation data. Now we'll see solar radiation data. So I have discussed yesterday in yesterday's class. Solar radiation is directly here converted into here. Generally, we have divided into three types. That is, your first one is your beam radiation, yeah, normal radiation. Next is your diffuse radiation. If you will add beam radiation and your diffuse radiation, you will get the global radiation. So see, a normal case, see a clear day. In figure 4.10, you have two diagrams. That is, first is clear day. In clear day, so diffuse radiations will be less, and if the total beam radiation plus diffuse radiations will be global radiation, so that will be, of course, it will be more than the diffuse radiations, and it will be 800 watt per meter square. The unit of solar radiation is generally a watt per meter square. So if you'll add your beam radiation plus your diffuse radiation, you will get the global radiation. Okay, you will get the global radiation. So, but in cloudy day, you can see the diagram 4.10b. What will be the actually in cloudy day? In cloudy day, this is the diagram. Global radiation is actually not sinusoidal. It is some gizzy in nature. Okay, some zigzag in nature also, you can say. So the beam radiation plus diffuse radiation is global radiation. You have to just remember this line, your global radiation is the summation of the beam radiation plus your diffuse radiation. Then see, uh, huh, we will next go for solar time. We'll go for solar time and your solar radiation geometry. We'll go for solar radiation geometry. Okay, so one thing I want to tell you, actually the standard time in India, the standard meridian is passed through Allahabad. So its latitude is around 81.44 degree east. Okay, 81.44 degree east latitude. So what happens actually, then your the standard time is not equivalent to your solar time. The standard time, if it is 2:30 a.m., yeah, 2:30 p.m. in the afternoon, it is not exactly the solar time. We have to convert your standard time into solar time. Okay, so solar time, please see the formula 4.3. If anybody want to take the screenshot, you can take it, because we'll solve a problem regarding this. Solar time equal to standard time plus minus 4 into LST. LST is the standard time, means the the Indian standard time meridian. Okay, again and again I am saying LST is the Indian standard time meridian, minus L location of the that, let us consider the location is given Delhi. So what is the latitude of Delhi is L location, and plus E minimum. E is your there is a formula how to calculate E. E is actually the error. Okay, E is the error, minimum error we want to take it. Okay, then generally what is the formula of E is represented by 9.87 sin 2b. Please जिसके पास ये बुक नहीं है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज विल सॉल्व वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस. 9.87 sin 2b minus 7.53 cos b minus 1.5 sin b. Okay, because you can see here the radiation is a function of cosine or sine. Okay, is a function of cosine or sine. Error is function of cosine or sine. So what is b? B is 360 divided by 364 into n minus 81. And what is n? N is the day of the year starting from 1st January. If anybody want to take the screenshot, please take the screenshot of this page, because we need this page, these formulas in later. Okay, again and again I am saying E equal to 9.87 sin 2b minus 7.53 cos b minus 1.5 sin b, and b is 360 by 364 into n minus 81, and the solar time is nothing but your standard time plus minus 4 into L standard time latitude minus L local plus E minimum. Okay, okay. We next will solve one problem. What is the difference between the solar time and standard time? Just 1 minute. Okay, so see the problem 4.1. See the problem 4.1. What happens?
So calculate the angle of incidence. Will not have gone through angle of incidence till now. So just we want to calculate your standard time, solar time. We just want to calculate the solar time for Mumbai. Okay. See, the longitude and latitude of Mumbai are 72.49 and your 18.54 degree north. Okay, and your 18.45 degree north. Got it? Okay. Longitude and latitude of Mumbai. What I have told you, so you have to find your solar time, standard time. So what is the formula of solar time? Solar time. Solar time is standard time. So please see in this formula, what is the standard time given? The standard time is given is 1:30 p.m. means 13:30. Okay, 13:30 hour. So 13:30 माइनस सी, ये प्रॉब्लम में ये आंसर अलग आएगा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग. सो व्हाट इज द डेट? द डेट इज गिवन 15th November. The date is given 15th November. Please be cautious. The date is given 15th November. So what is n? हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक चाहिए e. e चाहिए. आप ये फार्मूला को देखो, आप जो अगर ऊपर वाले फार्मूला को देखोगे 4.3, अगर ये फार्मूला को देखोगे आपको क्या चाहिए? ई चाहिए. ई के लिए क्या चाहिए? बी चाहिए. ठीक है, तो हमें ये मुंबई का हमारा व्हाट इज योर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन? 81.44. एंड व्हाट इज योर लोकल टाइम मेरिडियन? मुंबई का दिया है, मुंबई का 71.44 या 71.56 जो भी है वो दिया है. ठीक है, एंड व्हाट इज योर ई? ई कैलकुलेट करने के लिए हमें 4.4 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज एन? एन इज द डे ऑफ द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January. सो 1st January से 15th November कितना दिन है? कैन यू प्लीज टेल मी? बिटवीन 1st January एंड 15th November हाउ मेनी डेज आर देयर? Between 1st January and 15th November, how many days are there? Again, I am asking between 1st January and 15th November, how many days are there? Is my voice audible? Sir, it's 319, I guess. Screen? Sir, it is 319 days, I guess. Between 1st January and 15th November, 319 days. Huh? Okay. Okay. So use this formula. जो भी है 319 days होगा ही. So between use this formula and calculate B. What others are doing? Only one fellow is responding. What others are doing? Okay, calculate B and tell me. B formula is given 360 by 364 into n minus 81. Calculate B and tell me, and use B in equation 4.4 and calculate E. Okay, B formula is given 309 या 19 जो भी आया 319 minus 81 into 360 by 364. Then use your calculator, calculate E.
After calculating, please reply me what is your B, what is E. So when your E will be obtained, then we'll go for this one, 4.3. We'll calculate your solar time. I mean, again and again saying between January 1st January and November 19, one person responded that 319 days is there. So B will be 360 by 364 into 319 minus 81. You will get something. Calculate E. E का फॉर्मूला जस्ट 4.4 में दिया है. एंड सोलर टाइम निकालने के लिए योर स्टैंडर्ड टाइम, मैंने स्टैंडर्ड टाइम हमारे वो पूछा है क्वेश्चन में 13:30, 1:30 प्लस माइनस 4 इंटू स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 81.44 एंड एल लोकेशन इज 71.56. ओके, एल एस टी माइनस एल लोकेशन का डेटा मैं बोल रहा हूँ. 81.44 माइनस 81.44 minus 71.56 plus E will calculate from 4.4 and put it in solar time and tell me first your B, then E, then solar time. आप अगर बताओगे तो अभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा. सिद्धार्थ स्वरूप मल्लिक, तेजस पाढ़ी, सिमरन चंद, अमित महापात्र, अभिलाष पंडा. Yes, sir. Abhilash Uh, Panda, are you listening? Yes, sir. So can you please tell me what is your answer? Sir, B is 235.384 and Okay. E is 2.41. Okay, E is 2.41. Yes, sir. Just let me check. Okay, E is 2.41. इसे कैलकुलेट किया है. इसका तो B आया है. B is how much?
Sir, Please can you again tell me? 235.384. 235.384. And E is again, please tell me what is E? 2.411. सी आपका ये गलती हुआ होगा, आप डिग्री में ले लिए होगे, ठीक है। साइन टू बी आपका जो बी आया है ना, बी इज इन नॉट इन डिग्री, वो रेडियन में है। Okay, okay. Got it? Okay, sir. हाँ, उसको रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करो, उसी का प्रॉब्लम आया होगा। Okay, sir. नो अदर्स आर लिसनिंग? Sir, in degrees, E will be 14.741. It's coming na 14.741. Yes, sir, it's Yes. coming. Okay. So have you got the idea how to calculate standard time? Okay. That is for standard time. Next we'll proceed. See, ऐसा नहीं कि मैं सेम डेटा दे दूंगा, मैं कुछ अलग डेटा भी दे दूंगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली। ओके। अच्छा, एक चीज मैंने आपको व्हाट इज द लोकेशन लैटिट्यूड यू हैव टेकन, कैन यू प्लीज टेल मी? जो बोले आप 14 आ रहा है, 14.74, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई यू हैव टेकन, कैन यू प्लीज टेल मी? Can you please So, tell me what is the latitude of Mumbai? 71.5 I have taken. 71.5 में इतना आ गया 14.74? राउंड ऑफ करके सर वो आ जा रहा है 72. ओके, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इतना ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सो हम नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट से मैं प्रॉब्लम का डेटा चेंज कर दूंगा, बुक में जितना है उतना नहीं दूंगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री की तरफ। सो सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री में देखो, हम पहले 3 चीजें दिखेंगे, लैटिट्यूड एंगल, डिक्लिनेशन एंगल। देखो, मैं जब पूछ रहा हूं, अगर कोई मैं जिसका नाम रैंडमली ले रहा हूं, अगर आप नहीं आंसर करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको अटेंडेंस फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आप आंसर नहीं कर रहे, ऐसा तो मैं भी लॉग इन करके छोड़ के जा सकता हूं अभी, ओके, ठीक है। तो बी अटेंटिव, आपका क्लास है तो बी अटेंटिव। ऐसा नहीं कि देखो, आप कोई तो मतलब अटेंटिव रहते हैं ना, ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री। सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। पहला है लैटिट्यूड एंगल। मैं सारे टर्म को पूरा लेमैन टर्म में समझाऊंगा, सारे जितना भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ताकि आपको इजी हो जाएगा। एंड मैं फाइनली बोल रहा हूँ, आपको एक बड़ा सा देखना है कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इक्वेशन हम एग्जाम में दे देंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम में बहुत टाइम जाएगा, ये जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम मुझे शायद 45 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, टेक योर टाइम एंड टेल मी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, हम लैटिट्यूड एंगल की तरफ जा रहे हैं। लैटिट्यूड एंगल मतलब, प्लीज सी द 4.13a वाला फिगर, प्लीज सी इट। सो एक P एक पोजीशन है, ओके, P एक पोजीशन है, और ये जो ओ क्यू एक सर्कल देख रहे हो, ओ क्यू वाला सर्कल देख रहे हो, जो ओ क्यू उसका रेडियस एक सर्कल देख रहे हो, ये है इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। ये इक्वेटोरियल प्लेन से एक पोजीशन कितना डिग्री एंगल कर रहा है, वो एंगल है आपका लैटिट्यूड एंगल, इसको बोलते हैं LAT, लैटिट्यूड एंगल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्वेटोरियल प्लेन से जो पोजीशन ऑफ द प्लेस का जितना एंगल है, वो एंगल मेरा है लैटिट्यूड एंगल, ओके। सो अगर आपको दिया होगा 71.54 इज द लैटिट्यूड ऑफ योर मुंबई, तो आपको क्या करना है, 71.54 मिनट, आपको क्या करना है, 71 डिग्री को 71 डिग्री रख देना, 54 को डिवाइडेड बाय 60 कर देना, 54 by 60 विल बी अराउंड 0.9, सो 79.9 इज योर लैटिट्यूड एंगल, ओके। अच्छा, देन योर डिक्लिनेशन एंगल। सो डिक्लिनेशन एंगल क्या है, देखो ये है 4.13 बी का, देखो ये है अर्थ सरफेस,
अर्थ सरफेस का नॉर्थ साउथ ये हुआ। इक्वेटोरियल प्लेन से अगर तुम सन और अर्थ का सेंटर को तुम लाइन ज्वाइन करोगे, जो कि हम देखे थे कल 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर दूर था, उतना डिस्टेंस में वो जो डिस्टेंस और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन का लाइन और ये जो सन अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो एंगल है डेल्टा, इसको बोलते हैं डेक्लिनेशन एंगल। एक और बार बोल रहा हूँ, इक्वेटोरियल प्लेन और जो सन अर्थ का सेंटर को जो जोड़ता है जो लाइन, वो दोनों के बीच में जितना डिग्री है, दैट इज कॉल्ड योर डेक्लिनेशन एंगल। एंड द फॉर्मूला फॉर डेक्लिनेशन एंगल इज, प्लीज 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 इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम प्रॉब्लम करने के टाइम में ये चाहिए होगा। अगर आपके पास बुक है तो यू कैन नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, अगर बुक नहीं है तो प्लीज टेक इट द स्क्रीनशॉट। डेल्टा इज 23.45 sin 360 by 365 284 प्लस n, 284 प्लस n। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक हम जब b कैलकुलेट कर रहे थे, b इज योर 360 बाई 364 था, यहाँ पे 360 बाई 365 है। देखो ये n ना कोई ले सकता है 1 जनवरी और नवंबर 15 के बीच में जितना दिन हुआ, कोई 1 जनवरी को कंसिडर करते हैं, कोई नहीं करते हैं, नो नीड टू वरी, क्योंकि आप कंसिडर करोगे भी एक ज्यादा आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना 4.5 में, ये इतना साइन 600 और साइन 601 में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट्स व्हाई यू वोंट गेट एनी डिफरेंस बिटवीन दिस वन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज योर डेक्लिनेशन एंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं आवर एंगल। एक्चुअली आवर एंगल है क्या, खुद देखो। सोलर नून में ओमेगा इक्वल टू 0 में हमारा जब इसको बोल ओमेगा इक्वल टू 0 में सोलर नून टाइम को, नून टाइम इज कोइंसिडेंट विद द ओमेगा इक्वल टू 0। ओमेगा इज नॉट द फ्रीक्वेंसी हियर ओमेगा इज द आवर एंगल। सो पूरा 12 बजे हमारा क्या होता है, सन हमारा पूरा सर के ऊपर रहता है, ठीक है, दैट इज योर ओमेगा इक्वल टू 0। इन फॉरनून तो आपका क्या है, सोलर टाइम इज पॉजिटिव एंड इन आफ्टरनून योर सोलर टाइम इज नेगेटिव। सो ये जो देख रहे हैं ओमेगा इक्वल टू 45 डिग्री लिखा है, 360 degree is 24 hour, 1 hour is 15 minute, okay, and 1 degree corresponds to 4 minute, okay. One again sign 360 degree is 24 hour, 1 hour corresponds to 15 degree and 1 minute corresponds to 4 degree, okay. So ये जो अगर 9 बजे कितना टाइम होगा, तो 12 बजे से ये देखो मॉर्निंग में दिया है 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे और इवनिंग 6 बजे, टोटल ये कितना आवर एंगल है हमें देखना है। तो मॉर्निंग 6 बजे हमारा मतलब मॉर्निंग 6 बजे अगर सुबह सॉरी फॉर आफ्टरनून 12 बजे अगर आपका होगा ओमेगा इक्वल टू 0, तो मॉर्निंग 6 बजे आपका कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, बिकॉज 6 घंटा, अभी मैंने बोला 1 आवर इज 15 मिनट, सो 6 आवर इज 90 मिनट, 90 डिग्री, ओके। सो इफ 6 आवर इज 90 डिग्री, तो आप देख रहे हो कि ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू 90 में 12 बजे और ये है सुबह 6 बजे। सेम टाइम इवनिंग 6 बजे आपका कितना एंगल होगा, -90। सो आफ्टरनून इज नेगेटिव आवर एंगल एंड फोरनून इज पॉजिटिव आवर एंगल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आवर एंगल, योर स्टैंडर्ड सोलर टाइम मीन्स 12 बजे 12 o'clock माइनस योर सोलर टाइम अभी कितना बजा है into 15 degree is your hour angle. So please tell me at 10 o'clock what is your omega, at 10 o'clock in the morning what is your solar angle, या what is your hour angle। ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। at 10 o'clock morning time what is your hour angle। ये फॉर्मूला आपको दिया है 4.6, मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ at 10 o'clock what is your hour angle।
Again, I am asking at 10 o'clock in the morning, what is your hour angle omega? Sir, answer is 10. So this is 30. It's 30. Have anybody got the answer? Has anybody got the answer? What is the solar time at 10 o'clock? Sir, it's 30. 30, sir. तो ये बोलने में इतना लेट क्यों हो रहा था? ओके, मैंने म्यूट कर दिया था. ओके, ठीक है, थैंक यू. तो आपका ये सोलर टाइम 30 डिग्री है, ठीक है. तो सॉरी, आवर एंगल. नेक्स्ट हम चलते हैं इंक्लिनेशन एंगल और जेनिथ एंगल, सोलर अजीमुथल एंगल. आई नो कि इट्स टू मच हेक्टिक फॉर यू पीपल. आई नो, मैं खुद जानता हूँ. नो नीड टू वरी, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. एंड दिस इज नॉट एट मींस नो, आपको थोड़ा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी है, आपको बोरिंग लगेगा, बट स्टिल आई वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग.
नो नीड टू वरी, जो जितना प्रॉब्लम पूरा एग्जाम स्पेसिफिक में पढ़ाऊंगा, जितना भी एग्जाम में आएगा उतना एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा, एंड डे नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, बिकॉज आपका तो एट मैक्स 8 क्लासेस होगा, बिकॉज 4 संडे 4 सैटरडे 8 8 16, सो एक मंथ में 16 क्लासेस एट मैक्स होगा, तो मैंने नेक्स्ट वीक ही असाइनमेंट देना स्टार्ट करूंगा और 15 डेज विंडो रखूंगा। तो यहाँ पे काम करना, आप असाइनमेंट या क्विज टेस्ट देखते हैं जो कॉलेज डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्लिनेशन एंगल और अल्फा। सो इंक्लिनेशन एंगल फिगर 4.16 सीधा चलते हैं, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ एक्चुअली ये क्या है आपको। देखो कभी भी थ्योरी नहीं आएगा राइट अबाउट इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल क्या है मैं बता देता हूँ। देखो सी द फिगर, so see here sun rays is directly entering into point P, and point P is a horizontal plane में point P is the center, okay, to a horizontal plane. So if we'll just projection खींचेंगे अगर PQ projection, ठीक है, PQ projection in the southern direction अगर हम खींचेंगे वेस्टर्न और सदर्न डायरेक्शन को, देन ये क्या होगा, उसके बीच में और ये जो सन रेज जो इंसिडेंटेड हो रहा था उसके बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। देख रहे हो पी क्यू, और ये जो सन रेज आ रहा है ना, जो स्लांटेड सन रेज आ रहा है, ये सन रेज के बीच में जो एंगल है वो है हमारा अल्फा। अल्फा इज व्हिच एंगल? अल्फा इज योर, सी हियर इट इज रिटन, अल्फा इज योर इंक्लिनेशन एंगल। ओके, तो इंक्लिनेशन एंगल समझ में आया क्या है? इंक्लिनेशन एंगल इज द एंगल बिटवीन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर हम एक प्रोजेक्शन खींचेंगे, नॉट नॉर्मल, प्लीज लिसन, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज ए प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द सन रेज के बीच में जो एंगल है वो है हमारा अल्फा, ठीक है। देन देखो इसको थीटा जेड जो लिखा है इसको बोलते हैं जेनिथ एंगल। ओके, जेनिथ एंगल। सो ये जेनिथ एंगल, देखो अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन आया ना, व्हाट इज सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री, राइट अबाउट सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री, प्लीज आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देना और कुछ लिखना मत, जस्ट ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, हो जाएगा, हम पता चल जाएगा कि ये सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री बनाया है, ठीक है। प्लीज इसको, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने वो प्रॉब्लम जो आपको नोट्स दिया था उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। मैंने नेक्स्ट क्लासेस कुछ सॉल्व प्रॉब्लम दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज जेनिथ एंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय जेनिथ एंगल? देखो यही हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर हम नॉर्मल खींचेंगे, तो प्रीवियसली मैंने क्या बोला, प्रोजेक्शन खींचना है, अभी क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल खींचना है। ये नॉर्मल और सन रेज के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं हम थीटा जेड या जेनिथ एंगल। एक और बार बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैं एक नॉर्मल खींचूंगा, ये नॉर्मल और सन रेज के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं हम जेनिथ एंगल या थीटा जेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है हम सदर्न डायरेक्शन में, हम सदर्न डायरेक्शन वाला, और ये जो प्रोजेक्शन खींचे थे हम ओपी क्यूपी, जो पी क्यू प्रोजेक्शन खींचे थे और सदर्न डायरेक्शन का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम गामा एस। ओके, दैट इज योर गामा एस। सो व्हाट इज गामा एस? सी योर गामा एस इज, हाँ, योर गामा एस इज योर सोलर अजीमुथल एंगल। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट वन इज अल्फा इज योर इंक्लिनेशन एंगल, थीटा जेड इज योर जेनिथ एंगल, गामा एस इज योर सोलर अजीमुथल एंगल। ओके, सोलर अजीमुथल एंगल। सो देखो ये सरफेस नॉर्मल सरफेस है, अगर मैं एक इंक्लाइंड सरफेस का, अगर इंक्लाइंड सरफेस का निकालने बैठूं, तो देखो जो प्रीवियसली गामा एस था ना, आप खुद देखो ये गामा भी सेम है। ओके, गामा एस, यहाँ पे गामा है, तो ये गामा क्या, ये गामा को क्या बोलते हैं? ये गामा को बोलते हैं टिल्ट एंगल। ओके, दिस गामा इज योर टिल्ट एंगल एंड योर गामा एस इज योर सोलर अजीमुथल एंगल। गामा इज योर टिल्ट एंगल एंड ये जो बीटा है, देखो बीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्टर्न डायरेक्शन को, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन को मैंने एक पैरेलल खींचूंगा, ठीक है, एक पैरेलल खींचूंगा, वो पैरेलल और ये इंक्लाइंड सरफेस के बीच में जो एंगल है वो है मेरा बीटा। ओके, ये पैरेलल और इंक्लाइंड सरफेस के बीच में जो एंगल है वो है बीटा एंड बीटा इज आल्सो कॉल्ड एज ए टिल्ट एंगल। तो प्रीवियसली जो मैंने बोला था, देखो
gamma and beta. Gamma is also called as a tilt angle, but the better name is surface azimuthal angle. So gamma S is solar azimuthal angle, normal gamma is surface azimuthal angle. Both gamma and beta can be called as a tilt angle also. Beta is a special case of gamma. Okay, अच्छा, तो यहाँ सोलर ज्योमेट्री, आपको अगर सोलर ज्योमेट्री आएगा, ये आप गामा ये डायग्राम कर देना और थोड़ा इंक्लाइंड सरफेस दिखा देना, थोड़ा एक इंक्लाइंड सरफेस दिखा देना, and that inclined surface is your beta. That inclined surface is your beta. ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो है बीटा. ओके, देन हम चलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, नेक्स्ट इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या है, देखो हम अब तक जो पढ़ के आए ना सारे, ये सब हमें एग्जाम पर्पज में क्या पूछेगा मैं बता रहा हूँ. एग्जाम पर्पज में आपको पूछेगा कि सोलर इंक्लिनेशन एंगल का, सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री का बताओ, आप डायग्राम बना दो. तो आप ये प्लीज ये डायग्राम को क्लियरली बना देना, ठीक है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. ये सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री का है, जिसको चाहिए तो ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका एंड सेमेस्टर के पहले जो आपको 83 पेजेस का नोट्स दिया हूँ उसको छोड़ के मैं सोचा हूँ कि 10-15 पेजेस का जस्ट एक मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या क्वेश्चन फॉर्मेट एंड बुक में कहाँ है वो लिख दूंगा. मैं सोचा हूँ कि ऐसे जैसे कि आपको 40-50 क्वेश्चन दे दूंगा मिड सेमेस्टर के पहले. मैं सोचा हूँ मतलब अगर बाकी फैकल्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सोचा हूँ ऐसा 40-50 क्वेश्चन दे दूंगा, उसी से ही आएगा. ओके, देन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस में हम चलते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस में देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक बड़ा सा फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट हम आपको दिखा देता हूं. देखो ये सेम डायग्राम लिया गया है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को थोड़ा मैं टिल्टेड कर दिया है, ठीक है. देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन प्रीवियसली ऐसे था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन प्रीवियसली था आपका स्लांटेड, अभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है. एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका प्रीवियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे था ऐसे ही रखे हॉरिजॉन्टल प्लेन. एंड दैट इज योर इंक्लाइंड सरफेस. हम क्या देखे थे, इंक्लाइंड सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में जो एंगल है वो है बीटा. देखो यहाँ पे भी बीटा है, ठीक है. तो ये जो सन रेज आ रहा है एंड सन रेज एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइंड सरफेस अगर हम खींच देंगे तो ये जो एंगल हो गया ये हो गया हमारा थीटा आई. दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो यही हमारा एग्जाम पर्पज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कैलकुलेट कॉस थीटा आई. प्लीज मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप एक बार ये जो इक्वेशन दिखा है कॉस थीटा आई का, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है. इसको एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए बिकॉज इसी का ही हमें प्रॉब्लम करना है, ठीक है. अच्छा, कॉस थीटा आई इज कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा एंड ब्रैकेट में क्या है कॉस फाई कॉस बीटा प्लस साइन फाई साइन बीटा इनटू कॉस गामा. व्हाट इज गामा? Gamma is your surface azimuthal angle. What is beta? Beta is your tilt angle. What is phi? Phi is your latitude angle. ठीक है, सारे अभी बोल के आए पहले. प्लस cos delta sin omega. What is omega? Omega is your hour angle. अभी हम जो निकाले थे 12 o'clock minus your standard time into 15. Okay. Then your sin beta sin gamma plus sin delta sin phi cos beta minus cos phi sin beta cos gamma. Please do not worry. This formula will be provided to you in your exam. Okay? Question में लिखा होगा. आपको कैसे अप्लाई करना है वो देखना है, ठीक है. Because even I cannot remember such formula. Okay? During my exam days. Okay? I cannot remember the equation 4.7. ठीक है. But देखो एक चीज बता रहा हूँ. कुछ स्पेशल केसेस लिखा है 4.8 में, कुछ स्पेशल केसेस लिखा है. ये स्पेशल केसेस आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ओनली आपको ये 4.7 का इक्वेशन दिया जाएगा. उससे आपको स्पेशल केस कैसे निकालना है आपको थोड़ा याद रखना है. जस्ट देखो फॉर सरफेस फेसिंग ड्यू साउथ, देखो डायरेक्टली सरफेस साउथ को फेस्ड है. अगर सरफेस डायरेक्टली साउथ को फेस्ड है तो अभी क्या हो जाएगा, गामा इज 0 डिग्री बिकॉज सरफेस इज डायरेक्टली फेसिंग साउथ. ठीक है, ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये डायरेक्टली साउथ को ही फेस है, तो गामा क्या होगा 0 डिग्री हो गया. तो अगर गामा को प्रीवियसली अगर 4.7 इक्वेशन में मैं गामा को 0 डिग्री पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो तो ये जो था
प्रीवियस इक्वेशन में साइन फाई साइन बीटा कॉस गामा, प्लीज मुझे 1 मिनट फॉलो करना। साइन फाई साइन बीटा कॉस गामा, ये जो था इक्वेशन में साइन फाई साइन बीटा कॉस गामा, देख रहे हो ये गामा 0 हो गया तो कॉस गामा कितना हो गया 1 हो गया कॉस गामा, तो कॉस गामा 1 हो गया। अगर कॉस गामा 1 हो गया तो ब्रैकेट में ब्रैकेट वाले टर्म जो है उसमें क्या हो गया कॉस फाई कॉस बीटा प्लस साइन फाई साइन बीटा, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब क्या है कॉस ए माइनस बी, तो ये हो गया कॉस फाई माइनस बीटा। तो बाहर में कौन सा टर्म था, बाहर में था कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा, ठीक है, वो बना रहा। और एक और बार देखो गामा 0 डिग्री है तो ये टर्म क्या होगा साइन गामा है प्लस कॉस डेल्टा साइन ओमेगा साइन बीटा साइन गामा, ऐसा टर्म है। तो गामा 0 डिग्री है तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, बचा कितना साइन डेल्टा। और एक और चीज देखिए ये लास्ट में कॉस गामा है तो गामा 0 मतलब ये हो गया कितना कॉस गामा इज 1, तो ये हो गया साइन डेल्टा इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्म आपका बन गया कॉस फाई माइनस बीटा इंटू कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा प्लस साइन डेल्टा इंटू साइन फाई माइनस बीटा। प्लीज आपको मैं बता रहा हूँ ये स्पेशल केसेस का फॉर्मूला नहीं दिया होगा, आपको लिखा होगा कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द इंक्लाइंड सरफेस इज फेसिंग साउथ, और आपको फॉर्मूला दिया होगा ओनली 4.7। अगर आप ये 4.7 यूज करके कैलकुलेट करने बैठेंगे आपको डेटा शॉर्टेज लगेगा क्योंकि गामा गामा दिया ही नहीं है। दैट्स व्हाई आपको ये रखना है कि याद रखना है कि व्हेन द इंक्लाइंड सरफेस इज फेसिंग साउथ एट दैट टाइम माय गामा इज 0 डिग्री, so the formula will change to 4.8. okay, again when for horizontal surface directly inclined surface और horizontal surface अगर एक हो गया, मैंने क्या बताया inclined और horizontal के बीच में एंगल कितना है बीटा, अगर inclined और horizontal एक हो गया तो बीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। so when your beta is 0 डिग्री, आप खुद ही देखो 4.7 प्रॉब्लम में 4.7 फॉर्मूला में cos बीटा मेरा 1 हो गया, तो अगर cos बीटा 1 है तो क्या होगा cos डेल्टा cos ओमेगा, cos बीटा इज 1 तो बचा कौन cos फाई, तो पहला टर्म हो गया cos फाई cos डेल्टा cos ओमेगा, ठीक है। बीटा इज 0 डिग्री तो साइन बीटा कितना है 0, इसीलिए नेक्स्ट टर्म में कोई टर्म नहीं आया। फिर नेक्स्ट टर्म में देखो एक और साइन बीटा टर्म है, बीटा 0 डिग्री है तो नेक्स्ट टर्म में भी कोई टर्म नहीं आएगा। बच्चा कितना देखो cos बीटा इज 1 तो बच्चा है मेरा साइन डेल्टा साइन फाई, फिर नेक्स्ट टर्म में साइन बीटा है इसलिए वो 0 हो गया, तो बचा कितना ये दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन 4.9। दैट इज कॉल्ड योर जेनिथ एंगल। व्हेन बीटा इज 0 डिग्री योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो कॉल्ड योर जेनिथ एंगल। मैं बार बार बोल रहा हूँ when your beta is 0 degree, when beta will be 0 degree, when the inclined surface will exactly towards the horizontal surface, at that case beta is your 0 degree. When beta is 0 degree, angle of incidence will be equal to the angle of zenith angle. Okay, then your cos theta z का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये थर्ड कंडीशन को हम बाद में आएंगे, पहले हम एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अच्छा सो सेम प्रॉब्लम में मैं बोल रहा हूं आपका आंसर इतना नहीं आएगा और ये टाइम लगेगा, प्लीज टेक योर टाइम एंड कैलकुलेट, नो नीड टू वरी। इन द सेम प्रॉब्लम देखो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है टिल्टेड बाय 45 डिग्री। अच्छा टिल्टेड बाय 45 मतलब दे दिया तो ये कौन सा एंगल है बीटा, ओके बीटा इज 45 डिग्री, प्लीज राइट इट, मैं बोल रहा हूँ प्लीज राइट इट। सो नवंबर 15 को कितना दिन हुआ था, सेम प्रॉब्लम हम रिपीट कर रहे हैं, 319 दिन 319 डेज, ओके। अच्छा तो व्हाट इज आवर डेल्टा, हमें देखो हमें अगर एंगल ऑफ क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करने, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है हमें क्या क्या चाहिए, बीटा चाहिए, ओमेगा चाहिए, गामा चाहिए, डेल्टा चाहिए, ठीक है, गामा एस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो प्लीज हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा, डेल्टा फॉर्मूला इज 23. मैं एक और मिनट दिखा रहा हूँ डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, 23.45 साइन ये वाला फॉर्मूला 23.45 284 plus n. Please calculate delta and tell me what is delta, then only we'll proceed. Please calculate delta first.
मैं फॉर्मूला दिखा दिया, प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो ये डेल्टा का। 360 बाई 23.45 इंटू साइन 360 बाई 365 284 प्लस n। ये डेल्टा का डेल्टा मुझे बता दो, देन विल प्रोसीड। Sir, minus 19.147. Okay. So n is how much this? N is 314 days, 315. 14 या 15 you have taken? 319, sir. Okay. So you are getting minus 19.147. Okay. ठीक है. Then what is your अच्छा? So beta is beta is 45 degree. It is given in the questions. Beta is 45 degree. एक और चीज देखो, क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। Calculate the angle of incidence of beam radiation on a plane surface tilted by 45 degree from horizontal plane and pointing 30 degree west of south. Please see here. यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री ऑफ साउथ हम पॉइंट कर रहे हैं मुंबई का। तो मैंने क्या बताया, हम सदर्न डायरेक्शन से ही गामा एस गामा सब कुछ सदर्न डायरेक्शन से ही मेजर कर रहे थे। सो दैट वैल्यू 30 डिग्री इज योर गामा। ओके, दिस वैल्यू 30 डिग्री इज योर gamma. So please take gamma is 30 degree. Okay, please take gamma is 30 degree. So if gamma is 30 degree and beta is 45 degree, हमें देखो फॉर्मूला में हमें क्या था, cos phi था, cos beta था, cos omega था, cos gamma था, सब कुछ था। तो हमें पहले cos phi निकालना पड़ेगा। phi means latitude angle. Okay, phi means latitude angle। देखो कैसे निकालते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड एंगल कैसा निकालते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दिया है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ मुंबई आर 72.49 ईस्ट एंड 18.54 नॉर्थ। ओके, तो मुंबई का लैटिट्यूड दे दिया 18.54 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है पॉइंट कर रहे हैं प्लेस को, प्लीज अच्छा से सुनना, पॉइंट कर रहे हैं प्लेस को वेस्ट ऑफ साउथ को पॉइंट कर रहे हैं। तो हम कौन से डायरेक्शन को हम मतलब ले लेंगे, हमारा जो रेफरेंस नॉर्थ दीज आवर रेफरेंस। तो रेफरेंस में हमारा कितना एंगल है 18.54। तो हम क्या करेंगे, डिग्री टू डिग्री रख देंगे ऐसा, और 54 मिनट इज हाउ मच डिग्री, 54 by 60 is 0.9. So 18.9 is your phi. Okay, please write down your latitude angle is 18.9, your tilt angle beta is 45 degree, your surface azimuthal angle gamma is 30 degree। ठीक है, अभी हमें और क्या चाहिए, आप अगर फॉर्मूला को दिखोगे अभी हमें चाहिए ओमेगा। ठीक है, सन साइन आवर, सन साइन एंगल। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले जो कैलकुलेट करना है, तो आप पहले कैलकुलेट किए थे ई कैलकुलेट किए थे 14.74 आपका ई आया था। तो सोलर टाइम में आपको क्वेश्चंस में दिया है, देखो 1:30 PM में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1:30 PM में अगर आपको कैलकुलेट करना है, प्लीज ये इसको रेफर कीजिए, दैट इज योर स्टैंडर्ड टाइम, सोलर टाइम इज योर स्टैंडर्ड टाइम -4 इंटू लैटिट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन, मीन्स इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है 81.44 या 81 जनरली 81.44 ही ले लेना, -72.816। ओके, ये 72.816 किसका है, ये आपका मुंबई लोकेशन का है 72.816। ओके, 72.816 प्लस 14.74 आपको ई मिला था। देखो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आप हमेशा ना सोलर टाइम को स्टैंडर्ड टाइम और सोलर टाइम एक ले लेना। मैं बता रहा हूं, अगर आपका नियर बाय लोकेशन 81 डिग्री इज योर IST, आपको लोकेशन का जो दिया है फाइंड करने के लिए 72.49 ईस्ट का, तो अगर उसका डिफरेंस 10 डिग्री से कम है ना, आप डायरेक्टली सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम ले लेना। अगर आप सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम ले लोगे तो क्या होगा, आप सोचो कि मैंने जो ओमेगा का फॉर्मूला दिखाया था वो क्या था, 12 o'clock माइनस सोलर टाइम इंटू 15 डिग्री। ओके, 12 o'clock माइनस सोलर टाइम इंटू 15 डिग्री। तो आप अगर इसको ले रहे हो, इसको सोलर टाइम में मैंने क्या बोला, सोलर टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम को सेम ले लेना।
अगर आप सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को सेम नहीं लोगे तो आपको ये बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन जो दिया है 13 आवर 30 मिनट ये सब करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ठीक है कुछ एरर आएगा, नो नीड टू वरी, आप सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को सेम ले लेना। ओके, तो व्हाट इज आवर सोलर टाइम? सोलर टाइम मेरा मैं ले रहा हूँ 13 आवर 30 मिनट। तो अगर 13 आवर 30 मिनट है तो मेरा कितना बचा? हाँ, एक और चीज, आपको अगर 1 आवर 30 मिनट लिखा होगा ना तो आप उसको 13:30 में कन्वर्ट कीजिए, बिकॉज अभी हम नहीं बोलते हैं कि 2:20 हुआ है, अभी हम बोलते हैं जनरली 2:20 PM नहीं लिखते हैं, जनरली हम क्या लिखते हैं, सेशन में क्या लिखा जाता है, 14:20। ठीक है, तो आप उसको 12 माइनस 13:30 इंटू 15 होगा, तो कितना आंसर आएगा? ओमेगा, मैं एक और बार बोल रहा हूँ, योर ओमेगा इज 12 माइनस 13:30 इंटू 15। So what is the answer? What is your answer? समझ में आया? सुप्रिया या क्या नाम है? सुप्रिया, only you are responding. सुप्रीति, got it? Yes, sir. Calculating. अभिलाषा पंडा, हाँ अभिलाषा पंडा, what is the answer? आप सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को सेम ले लेना। अभिलाषा पंडा, 12 o'clock minus 13:30, हाँ अभिलाषा, can you please tell me what is your answer? यस सर, 1 मिनट बोल रहे हैं। 12 o'clock minus 13:30 into 15 means 1 hour 30 into 15. It will come 22.5 na? Not 22.5. How much you are getting actually? Can you please tell me? See how to convert 12 minus 13:30 is 1 hour 30 minute into 15. So if 15 हो गया, so into 30 जब करोगे तो 7.5 आएगा. So please convert that 7.5 into minute. Okay, please convert that 7.5 into degree. Sorry, 7.5 into degree. Please convert that 7.5 into degree. आपका एक्चुअली कितना आ रहा है? 22.5. ओके, फॉर 15 into 1.30 is sorry, 15 into 15 15 4.5 19.5. आपको ऐसा 19.5 आएगा. तो 19.5 जो आ रहा है 19.5 डिग्री. गॉट माय पॉइंट? आप बता दो एक बार, मैं फिर बताता हूँ कितना आंसर आएगा. देखो, इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे कैलकुलेशन कर दो. 12 hour minus 13:30 is how much? 1 hour 30 minute. And your 1 hour 30 minute is how much? 90 minute totally. So 90 minute into 15 is how much? 1350 minute. Okay, 1350 minute. So 1 hour is 15 minute. 16 sorry, 1 degree is 15 degrees 1 hour. ऐसे हम करते हैं because 360 degrees 24 hour. So 1 degree is 360 by 24 means 1 degree is 15 minute. Okay, तो आप जितना आया 1350, 15 into 9 is 1350, 1350 divided by 15 कर दो. ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 कर दोगे तो आपको क्या होगा?
डिग्री में मिल जाएगा. गॉट माय पॉइंट? सुप्रीति, हैव यू गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir, got it. व्हाट इज योर आंसर? Sir, after dividing 1350 by 15, I am getting 90. Okay, you are getting 90. So 90 Yes, sir. means 90 is the total sunshine hour. Okay, 90 is the total sunshine hour in minute, because we have calculated it in minute. अच्छा, तो आपको इससे भी कैलकुलेट करिए. अगर आपको मिनट में पूछा होगा, अगर हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें डिग्री चाहिए, तो व्हाट वी विल डू? 1.3 into 15 is how much? 19.45? Yes or not? 19.5? 1.3 into 15 is 19.5? Yes, sir. Yes or no? Okay, 19.5. So simply this 19.5 is your degree. Simply this is your hour angle in degree. अगर आपको आवर एंगल मिनट में पूछा होगा, मैं जैसे बोला पहले ऐसा करना. अगर आपको आवर एंगल मिनट में नहीं पूछा है, डिग्री चाहिए, हमें मोस्ट प्रोबेबली डिग्री में चाहिए होगा, तब आप सीधा 1.3 into 15 कर देना. ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया हमारा. देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको माइनस साइन एक आएगा, प्लीज उसको ध्यान देना. 12 माइनस 1330 किए हैं, तो एक माइनस साइन आएगा. प्लीज ओमेगा को हम लिखना माइनस 19.5 डिग्री. ठीक है? मैंने यहाँ क्या किया, सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम को सेम लिया. मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, अगर जो लोकेशन दिया है, लोकेशन का जो लैटिट्यूड है 70 प्लस दिया होगा, तो आप डायरेक्टली ले लेना सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है? सेम ले लेना. ओके, then everything you have, gamma is 30 degree, beta is 45 degree, phi is 18.9, but omega we have calculated minus 19.5. Please take it as minus 19.5. Okay, do not take as minus 17.27. We have not taken, we have taken minus 19.5. So calculate, please calculate cos theta I. आपके पास सारे formulas है cos theta I. Please calculate cos theta I using this formula, using 4.7. ये बहुत मतलब बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन करने में 5 मिनट लगेगा. प्लीज टेक योर थीटा आई. व्हाट इज डेल्टा? सुप्रीति, कैन यू टेल मी व्हाट इज डेल्टा? यू हैव कैलकुलेटेड minus 19.147. ओके, Yes, sir. and omega you have calculated minus 19.5. Phi is 18.9 degree, beta is 45 degree, and gamma is 30 degree. Okay, please calculate what is cos theta I. See, whatever you will get cos theta I, उसका कोसाइन इनवर्स ले लेना, आपको थीटा आई मिल जाएगा. क्वेश्चन में वही पूछा है. देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा तो 6 मार्क क्वेश्चन आएगा. जब हो जाएगा तो अनम्यूट करके आप बता देना आंसर. मैं जस्ट
सिद्धार्थ स्वरूप मलिक, सिमरन चंद, and who is Angan.gm? What's your name? Is my voice audible first? It should be Yes, sir. audible. Okay, Supriti, have you got the answer? Sir, I got cos theta I as 0.77. I am doing the inverse. Yeah. Thank you. At least you are responding. Otherwise, मेरा network चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी मैं नहीं जानता था. अमित महापात्रा. Okay. Angana.gm. Satvik Das 872. Subham Patnaik. Yes, sir. So are you listening? Yes, sir. I'm listening and calculating the values. Tell me how much you have got. Sir, 2 minutes. I'm just calculating the final value. Okay. Okay. तेजस पाढ़ी, अर्पिता धड़, स्वयं सामल. Absent. Okay. Amit Mahapatra. Yes, sir. Tell me how much you have got. How much you got the cos theta I value? You are not following at all. Acha, you are doing. Okay, I am waiting for you only. Supriti, have you calculated cos theta I value? Theta I value? Yes, sir. I got 39.16. Okay. See, I am again and again I am saying, please do not do your calculation जो मैंने बताया E, B ये सब मत करो, बहुत ज़्यादा hectic हो जाएगा. Directly take your solar time and standard time as same. जब आपका 70 डिग्री से above दिया होगा, because our Indian standard time latitude is 81.44, तो आप same ले लो. अगर same नहीं है, मतलब अगर आपको ऐसे specific दिया है कि calculate solar time और कोई प्लेस दिया है जिसका कि लैटिट्यूड 30 डिग्री है, ऐसा है, तो उस टाइम में आप कैलकुलेशन कीजिए. अदरवाइज यू शुड नॉट डू कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. डायरेक्टली सोलर टाइम. डायरेक्टली टेक योर स्टैंडर्ड टाइम एज योर सोलर टाइम. ओके, नेक्स्ट हम ये सोलर डे लेंथ को पढ़ेंगे. जस्ट सोलर डे लेंथ को जस्ट में सुप्रीति, जस्ट 1 minute आई एम वेटिंग फॉर अदर्स आंसर. Yes, Supriti, how much you are getting? 39 degree, na? Yes, sir. 39.16. So even if you will take your standard time also, you will get your 37.23. So you will get near answer. No need to worry. Okay. So again and again saying this for Sir, I am getting 8.25. Okay. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन शेयर करने के लिए भी बोलूंगा. ठीक है, बिकॉज मुझे पता है ऐसे आप आजू बाजू आंसर बोल रहे होंगे कोई. ठीक है. हु इज दिस? अभी जो बोला अनम्यूट करके, हु इज दिस? Satvik. ओके, ठीक है. I am also getting like 37.25. हु इज दिस? अभी से Amit.
ओके ओके ठीक है, मैं जानता हूँ आपको पढ़ने में दिक्कत है, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, यू आर इंटर्नशिप स्टूडेंट, आज होल डे आपका क्लास है, मैं जानता हूँ इट इज टू मच हेक्टिक, बट क्या करें, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, मैं और छोड़ दूंगा, मैं और 15 मिनट में छोड़ दूंगा, नो नेट टू वरी, आपको टाइम भी मिल जाएगा। आपका 4 to 6 भी क्लास है? यस सर। फोर टू कौन सा Yes, क्लास है? sir. 4 to 6 कौन सा क्लास है? Which class is this? 4 to 6 पता नहीं ना? आप लोग के पास शेड्यूल नहीं गया है? नो सर। तो आप अपना फैकल्टी एडवाइजर को मांग सकते हैं, जो भी फैकल्टी एडवाइजर है आप उनको मांग सकते हैं, मैडम सर प्लीज गिव अस शेड्यूल। Excuse me, अरे sir. अभी हाँ हाँ Sir, I am present. Actually, due to some network issues, I was not able to reply. Who is this? What's your name? प्रेजेंट तो Satwik. सबको ही रहते हैं, प्रेजेंट तो सबको ही रहते हैं, ठीक है। Even I am universe also is present. also present. Even Obviously, universe sir. is also present. See, even universe is also present. But आपको जो बोला था मैंने, ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार बोला आपको, बहुत बार आपका नाम पुकारा, ठीक है। ओके, जो भी है तो अभी 3 सब्जेक्ट तक खत्म हो गया होगा, 10 to 12 सेकंड, 2 सब्जेक्ट तक खत्म हो गया, जिसका बचा उसका 4 to 6 है और क्या। ओके, तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, सोलर डे लेंथ। ये 1 मिनट, इसका और कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, सोलर डे लेंथ का एक प्रॉब्लम हम करते हैं, देखो। तो सोलर डे लेंथ क्या है? तो एट सनराइज द सन रेज आर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। सनराइज केस में सनराइज क्या होगा? हॉरिजॉन्टल सरफेस को पैरेलल रहेगा, बट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दैट टाइम, सी अब खुद देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को सनराइज कितना डिग्री एंगल कर रहा है? 90 डिग्री। अगर मेरा सनराइज डायरेक्टली अभी ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट केस में हम देखे थे ना, आवर एंगल कितना था? 90 डिग्री। इवन सनसेट अगर आप 6 बजे ले लोगे तो कितना एंगल था? 90 डिग्री। तो वो केस में तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ जेनिथ एंगल जो भी है वो तो 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। अगर थीटा आई 90 है तो कॉस थीटा आई कितना होगा? 0, ठीक है। तो कॉस थीटा आई आपका 0 डिग्री हो गया। तो अगर कॉस थीटा आई आपका 0 डिग्री हो गया, देखो, तो मैं ये जो प्रीवियसली इक्वेशन था 4.9, वही केसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू थीटा जेड वही केसेस में है, तो वो केस अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो खुद, तो क्वेश्चन क्या था? कॉस फाई कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा, फार्मूला क्या था? सॉरी, कॉस फाई कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा साइन डेल्टा साइन फाई, यही फार्मूला था। तो इसमें ये 0 डिग्री है, कॉस थीटा आई 90 डिग्री है, कॉस थीटा आई कितना है? 0 है। तो इससे हमें ओमेगा एस कैलकुलेट करना है, ये ओमेगा एस को बोलते हैं सोलर डे लेंथ, ओके। तो इसमें ओमेगा एस क्या होगा? तो हमारा साइन डेल्टा साइन फाई इस साइड आ जाएगा, तो माइनस हो गया। तो साइन डेल्टा साइन फाई के साथ हमें क्या डिवाइड करेंगे? कॉस डेल्टा कॉस फाई। तो व्हाट विल बी साइन फाई बाय कॉस फाई? tan फाई। व्हाट इज साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा? tan डेल्टा, ठीक है। तो ये केस में क्या हो गया? ओमेगा एस इज प्लस माइनस कोसाइन इनवर्स माइनस tan फाई tan डेल्टा। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला 4.11। एंड एक और बात बोल रहा हूं आपको, ये इक्वेशन आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्पेशल केस से आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लस माइनस कोसाइन इनवर्स tan फाई tan डेल्टा, ठीक है। प्लस माइनस कोसाइन इनवर्स tan फाई tan डेल्टा, ओके। अच्छा, तो हम जो देखे थे ये वाला चीज, जस्ट 1 मिनट, ये प्लस 45 डिग्री और ये केसेस में माइनस 45 डिग्री दिस साइड। सो व्हाट विल बी द टोटल? 2 ओमेगा एस। टोटल इज 2 ओमेगा एस। तो ओमेगा एस अगर मेरा प्लस माइनस कॉस इनवर्स माइनस tan फाई tan डेल्टा है, तो व्हाट विल बी योर 2 ओमेगा एस? 2 ओमेगा एस इज 2 कॉस इनवर्स माइनस tan फाई tan डेल्टा, ठीक है। तो जस्ट एक 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर ये हमारा 2 ओमेगा एस हुआ, देखो मुझे ओमेगा, इससे मेरे को टाइम निकालना है, तो जो टाइम होगा टोटल, इसको बोलते हैं सन साइन आवर, ओके। प्रीवियसली जो हम ओमेगा कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो सन साइन आवर एंगल था, ठीक है। अभी हमें सन साइन आवर कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या 15 मिनट इज हाउ मच डिग्री? 1 डिग्री, ठीक है।
15 degree is 1 hour angle because 360 degree is how much? 24 hour. So 15 minute 15 degree is 1 hour angle. Okay, तो इसमें जस्ट ना हमें क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस इक्वेशन है 2 cos इनवर्स माइनस tan phi tan डेल्टा, इसमें हम 15 डिवाइड कर देंगे तो ये हमें जो मिल जाएगा इसको बोलते हैं TD और इसको बोलते हैं सन साइन आवर. प्लीज इसको याद रखिए, 2/15 कोसाइन इनवर्स tan minus tan phi tan delta. ठीक है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इक्वेशन 4.12. ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इक्वेशन 4.12. ठीक है, एक और बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए, हम अभी इसका प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, अच्छा तो अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम 4.2 की तरफ. ओके, तो श्रीनगर दिया है. देखो एक और चीज बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक श्रीनगर एक प्लेस दिया है, तो श्रीनगर जब दिया है उस केस में आपको सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग निकालना पड़ेगा. ठीक है, उस केस में आप मत लीजिए. ओके, जैसे कि इलाहाबाद का बगल थोड़ा बहुत आसपास रीजन दिया होगा तो आपको नागपुर दिया है. ठीक है, अब सोलर टाइम स्टैंडर्ड टाइम सेम ले लो. ठीक है, ऐसा बहुत प्रोबेबिलिटी है, मतलब 99% प्रोबेबिलिटी है सोलर टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम लेना पड़ेगा. ठीक है, ओके, तो दोनों अलग अलग डे दिया है, जनवरी 1 जुलाई 1. तो जनवरी 1 में कितना डेज है, नंबर ऑफ डेज n इज 1. जुलाई 1 में कितना डेज है, मतलब कैलकुलेट कर लेना, 182 डेज के आसपास आया है. ठीक है, 182 डेज. ओके, अच्छा तो हर ईच डे के लिए डेल्टा कैलकुलेट करो. डेल्टा मींस डिक्लिनेशन एंगल. ठीक है, देखो टीडी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक और बार दिखा रहा हूँ. टीडी कैलकुलेट करने के लिए फाई चाहिए. व्हाट इज फाई? फाई इज योर लैटिट्यूड एंगल एंड व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज योर डिक्लिनेशन एंगल. हम दोनों केसेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. सो प्लीज कैलकुलेट डेल्टा बाय टेकिंग n इक्वल टू 1. डेल्टा का ये फॉर्मूला है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा. प्लीज कैलकुलेट डेल्टा when n equal to 1 and tell me the value, and please calculate delta when n equal to 181, not 182, it is 181 because I have not taken July 1 into account. मैंने जनवरी 1 से जून 30 तक लिया है. ठीक है, प्लीज कैलकुलेट डेल्टा when n equal to 1. प्लीज कैलकुलेट डेल्टा when n equal to 181, sorry, 181. कितना है anybody when n equal to 1? What is delta? Can anyone tell me what is delta when n equal to 1 in 4.5 equation? So take मिश्रा या क्या था टाइटल, जो भी था, कैन यू प्लीज टेल मी? अरे n इक्वल टू 1 पुट करना है जनरली ओनली. अमित महापात्र, सत्विक दास, कैन यू प्लीज टेल मी? प्लीज टेल मी व्हाट इज डेल्टा व्हेन n इक्वल टू 1. देखो n इक्वल टू 1 पे डेल्टा कैलकुलेट करो, n इक्वल टू 181 पे डेल्टा कैलकुलेट करो. ठीक है, 2 डेल्टा आएगा. फ्रॉम दैट डेल्टा TD इक्वल टू 2/15 कोसाइन इनवर्स माइनस tan phi tan डेल्टा. एंड व्हाट इज फाई? आपको फाई कैसे कैलकुलेट करना है? श्रीनगर का लैटिट्यूड आपको क्वेश्चन में दिया होगा. श्रीनगर का लैटिट्यूड है 31.50. ठीक है, 34.50. ठीक है, 34.05.
तो आप 34 को 34 रखे रहना, 05 को डिवाइडेड बाय 60 कर देना, 083 आएगा। ठीक है, 5/60 083, तो आपको 5 होगा 34.083 डिग्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 को 5/60 कर देना, बिकॉज 5 मिनट दिया है, तो 34.083 डिग्री श्रीनगर का लैटिट्यूड आ गया। देन आपको tan phi आ गया। tan डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा फॉर डिफरेंट केसेस डिफरेंट है। फॉर बोथ द केस January 1 and July 1, you have latitude angle is same, but your declination angle will change. Latitude angle will depends on only on place, okay, but the declination angle will depend on the number of days. So please calculate for n equal to 1 what is delta, and n equal to 181 what is delta. Then your TD का formula मैंने बोला 2/15 plus minus cosine inverse minus tan phi minus tan phi into tan delta. आ गया सबसे सब। What is delta for n equal to 1? So minus 23.012. Okay, you have calculated. Okay.
Then what is delta for 181? 23.184. It's positive. Yes, sir, it's positive. Okay. Then what is your delta हो गया? Delta के बाद what is TD? Have you calculated? TD? Yes, sir. Yes, sir, done. For What n is the equal to answer? 1, n equal to Huh? 1, I'm getting 9.773. And for n equal to 181, I'm getting 14.246. Okay. So ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट एंड आप जस्ट एक cos थीटा का फार्मूला को आपको दिया जाएगा एंड ये फार्मूला आपको नहीं दिया जाएगा. जो बड़ा सा फार्मूला है वो आपको दिया जाएगा 4.7 इक्वेशन में. एंड अगर ये बुक किसी को चाहिए तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, ग्रुप में पता नहीं बहुत कम लोग अभी भी है और ठीक है, इट्स योर पर्सनल चॉइस. आई विल नॉट फोर्स समवन एनीवन टू जॉइन एनी ग्रुप. ठीक है. अच्छा, और एक और चीज में जस्ट कौन कौन प्रेजेंट है देखना चाहता हूँ. ठीक है, जस्ट रेस्पॉन्ड करना और कुछ नहीं, जस्ट रेस्पॉन्ड करना. अमित महापात्रा. ऐसा ओके ओके ओके. मतलब नाम चाहिए मुझे. angana.gm. मेरे को जस्ट आप प्रेजेंट डालने के लिए नेम चाहिए. angana.gm. हु इज व्हाट इज योर नेम? ठीक है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कौन है ये. आप ऐसे कोई आईडी से आ जाएंगे, मैं कैसे पता करूंगा व्हाट्स योर नेम? अर्पिता 45 DAHL. व्हाट्स योर नेम? अर्पिता दल सर. ओके ओके. बरती अर्पण. ठीक है. अभिलाषा पंडा. सात्विक दास. यस सर. हाँ हाँ. सिमरन चंद. सुप्रीति व्हाट्स योर Yes, नेम? sir. Supriti Sinha. ओके. शुभम पटनायक परहैप्स. स्वयं सामल. श्वेतपद्मा. व्हाट्स योर नेम? प्लीज कैन यू टेल मी श्वेतपद्मा? अगर और किसी को भी पता है प्लीज बोल लो. मैं जस्ट जानना बिकॉज कोई दूसरे आईडी से आ जाता है ना. दास. तेजस पाढ़ी. ठीक है. मेरे को एक नाम पता नहीं चल रहा है. angana.gm. हु इज दिस? कैन यू प्लीज टेल मी? अंगना घोष Sir, मजुमदार. Angana Ghosh. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. ओके, विश यू अ वेरी हैप्पी होली. ओके. सेम टू यू सर. हैप्पी होली सर. हैप्पी होली. थैंक यू. थैंक यू सर.